Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will all be fine. Today, the topic which I have selected for today is simple present tense. जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि आपके सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन होता है करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब. सो फॉर दैट मैटर वी आर गोइंग टू डू द टेंसेस ताकि आपको पता चले कि आपने अपना कौन सा सेंटेंस किस टेंस के हिसाब से चेंज करना है. तो उसके लिए पहला टेंस जो हमने आज सिलेक्ट किया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और लेक्चर के एंड पे हम करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे और उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन. जब भी आप देखें कि आपने कोई जनरल स्टेटमेंट देनी है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो बयान करना है, या आपने प्रेजेंट टाइम की कोई बात करनी है, तो उसके लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इज और आर का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा मैं आपको आज कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी. अगर आप देखें कि आपके सेंटेंस में ये कीवर्ड्स मौजूद हैं जैसे नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, ये तमाम कीवर्ड्स हमें बताते हैं कि हम कोई काम जो है वो हैबिचुअली और कोई काम रूटीन मेथड में कर रहे हैं. तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं यूज होता है. I sometimes skip breakfast. She goes to school late. Mr. and Mrs. Jones always visit their grandchildren. ये तमाम सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं कि हैबिचुअली ये काम अक्सर औकात होते रहते हैं, इसलिए हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और ये वाले कीवर्ड्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे ये देखने के लिए कि आपने सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से चेंज करना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है डू और डज. नाउ वी हैव टू डिसाइड वेयर वी हैव टू यूज डू. विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन. एक से ज्यादा अगर नाउन्स होंगे तो उसमें हम डू इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा जो प्रोनाउंस है आई, यू, वी, दे, उसके साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह ही, शी, इट प्रोनाउंस के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे. और अगर हम देखेंगे कि नाउन्स जो है वो एक से ज्यादा है, सपोज बॉयज है, गर्ल्स है, मेन है, वेमेन है, तो हम उसके साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ जो कि सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे और एक से ज्यादा के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो डू और डज हैं. हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो टू के साथ नॉट और डज के साथ नॉट लगा के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं लाइक डजंट और डोंट. क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फिर हमें हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होंगे टू और डज. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज जो है वो जुमले के शुरू में लिखे जाएंगे. और हमेशा याद रखें कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज, तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की केस में डू और डज जो है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा और कंस्ट्रक्शन जिस सेंटेंस की होगी वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म. व्हाट डज इट मीन? Main verb in the base form, it means first form of the verb. These are few sentences you can see. Positive sentences. Then in negative sentences, we have used helping verbs like do or does. And in interrogative sentences, does or do, they are coming in the beginning of the sentence. Now the important part of the lecture is here. This is the question which you people are going to have in your exam. In class 9 and in class 11, you are going to have a question, correct use of the verb. So in this way, you have to change the sentences.
A verb will be there within the bracket, and you will have to see in which tense you have to change the verb, and you have to write the whole sentence. Any work in a language school, she be a teacher. Now, when we talk about be, the forms of be according to the present tense is, and are. Always remember this thing that whenever you see be is there within the bracket, so the present form of be, are, is, and are. Now we see the answer key to these sentences. This is the answer key to these sentences. You can see that how you have to change the verb and how you have to write the whole of the sentence by changing the verb. As I told you that the present form of be is, and are. So according to the subject, we have used is over here. She is a teacher. So whenever you have to use is, are, or do or does, or you have to just add the verb over there, it is always according to the subject. Then we come to some negative sentences over here. And if you have to make these negative sentences according to the present, simple present tense, so this is the way you have to do it. I am going to give you the answer key. The children are not tired. Carol has not got any brothers or sister. I do not drink milk. So in this way, you can use the sentences and you can change them. Then we come to some sentences. These are all the sentences which you have to make according to the interrogative, according to the interrogative pattern. So these are the sentences. I would like all the students just to do these sentences themselves, and then the answer key is there. You can easily check your answers from the answer key. Have you got a dog? Do they speak English? Am I right? Does he play tennis? Are you on holiday? So in this way, you can easily check your answers. I hope you have understood the whole of the test which we have done today. So in this way, it will be very, very easy for you people just to understand and just to recognize that which tense you have to use when you are doing the correct form of the verb. Okay, students, Allah Hafiz.